Hey guys, and welcome back to my channel. So hope you all guys are doing great, and today I'm going to do a valentine makeup look, and I'm start to do with these Neutrogena Suns Protection SPF 50, and I'm applying in a dot. After that I'll blend with my hands because most of the times I like to blend with my hands only because it blends very perfectly. And whenever we are going out, we should not forget our sunscreen because sunscreen protection help our skin from harmful sunlight rays, and that is a UVA and UVB rays. About the sunscreen everyone knows, so I'm blending with my hand very nicely. So after sunscreen I'm using a Lakme Blur Perfect primer, and this primer is a very soft and smooth texture, and it gives you a very nice base. And primer helps to minimize our pores, and after that if we apply foundation, our foundation will not look cakey, and it gives a very nice. And this primer has a slightly yellowish color, so it gives you a very slightly yellowish base. After primer, I'm using a Swiss Beauty Cover Studio concealer palette, and this palette has a many different color, like it has a corrector shades also is there, and concealer and the contour also is there. So I'm blending, I'm applying with this brush because I have a slightly little bit of blemishes, brown spot, and dark circle near my eyes, so I just wanted to hide all those things, and just correcting all those things. So, and I'll apply with this brush, and later I will blend with my beauty blender. So for powder, I'm using a Maybelline Fit Me compact powder, and I'm not applying any foundation, so I want a more coverage look. I want a more coverage, and this compact doesn't have any kind of foundation base, so इसीलिए मैं मेरा जहाँ पे highlighter point है, जैसे my forehead, my cheeks and my chin, वहाँ पे मैं थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट लेके लाइक ना अच्छे से प्रेस करूँगी, प्रेस करके अप्लाई करूँगी ताकि अच्छे से कवरेज मिलेगा मुझे. सो एंड प्लस मैं मेरा हेयर लाइन के पास भी मैं अच्छे से अप्लाई करूँगी, बिकॉज अगर अच्छे से अप्लाई नहीं करेंगे तो थोड़ा अननेचुरल लुक्स होगा. सो इसीलिए मैं अच्छे से मेरा हेयर लाइन के पास भी अच्छे से अप्लाई करूँगी ये कम्पैक्ट. So for eyebrows, I'm just combing my eyebrows with this brush, and I'm not using anything like a palette or something. I'm just using a wax cream, and I'll apply with this brush because मेरा थोड़ा सा eyebrows thicky है, and और ज़्यादा करूँगी तो it looks like bit of unnatural. So मुझे थोड़ा natural look ही चाहिए, and I'm just combing with this brows, and compared to both eyebrows, one side में थोड़ा सा one part में थोड़ा सा खाली है, तो वहाँ पे slightly fill करूँगी. After that again I'll comb with the brush. ऐसे करने से मेरा eyebrows थोड़ा natural look होगा कि जहाँ जहाँ पे maximum amount से है वहाँ पे remove होगा, and my eyebrows will look more natural. So for eyeshadow, I'm using a Huda Beauty nude palette. It has a very beautiful shades, all are nude shades, and I'm applying only one shades, and that is a tea shades. It's a very lovely color, and I'm applying all over my crease, my inner corner, outer corner, and I
eyelids too, and later I will apply on my lower water lash line also. सो आई शैडो के बाद मैं मेरा आई लैशेस को कर्ल कर रही हूँ बिकॉज़ इससे काफ़ी अच्छा आई लैश को काफ़ी अच्छा लुक देते हैं। एंड उसके बाद मैं यूज़ करूँगी मस्कारा, वो मेवलिन मस्कारा, एंड इट गिव्स अ वॉल्यूम टू माई आई लैशेस। इसको मैं अच्छे से कोट करूँगी मेरा आई लैशेस को। सो मस्कारा यूज़ करने के बाद मैं यूज़ करूँगी आईलाइनर। ये लैक्मी आईलाइनर है, लैक्मी नहीं तो मेवलिन आईलाइनर है। सो मैंने लास्ट वीडियो में भी मेंशन किया था क्योंकि मैंने नाम भूल गया। सो इसको मैं एक वेरी थिन लाइन में ही अप्लाई करूँगी। So now I'm contouring my face and I'm using Swiss Beauty Cover Studio Concealer Palette जो मैंने पहले ही यूज़ किया था। एंड वहाँ पे एक कंटूर का शेड्स भी था, सो आई एम यूजिंग दैट वन एंड आई एम कंटूरिंग माई चिक्स, माई जॉ लाइन and my nose also, and I'm blending. After that I'll blend with my beauty blender, and false lashes already मैंने off camera apply कर चुकी थी because I'm not good to apply false lashes, and mirror को भी काफ़ी close रखना पड़ता है, so I feel like it doesn't look great look good in on camera. So already मैंने अप्लाई कर लिया था. After that मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लशर, एंड थोड़ा सा सॉरी मैंने पैलेट शो नहीं किया. After that I'm using Swiss Beauty lipstick, and yeah, that's all my makeup look. So hope you guys enjoy my video, and so don't forget to give like, share and subscribe my channel. Hope you guys enjoy my video, and here's my final look. So bye bye, see you, we'll meet in our next video. Thank you.